Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss unit number 6.3. This is a poem, Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. As the name of this poem shows that it is about past time. Actually, this poem is a very beautiful comparison of old time and of present age. Let's start the poem. Look, stanza number 1. Once upon a time, son, बेटे एक दफ़ा का जिक्र है कि दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, वो अपने दिलों के साथ हंसते थे, एंड लाफ विद देयर आईज, और अपनी आँखों के साथ हंसते थे, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो सिर्फ अपने दांतों के साथ हंसते हैं. वाइल देयर आइज ब्लॉक्ड कोल्ड आइज, जबकि उनकी बर्फ की सिलों जैसी सर्द मोहर आँखें सर्च बिहाइंड माई शेडो, मेरे साए के पीछे भी तलाश करती हैं. In this stanza, the poet gives the comparison of old people and their pure nature, that they used to laugh with the core of their heart, and they used to laugh when they were happy. But the present time is a time of hypocrisy. Here people deals with the hypocrisy. They are laughing. The people of present age are laughing just for the sake of their worldly benefit. They have no intention to laugh, but they pretend. And this is the very basic difference between the old and new people, between the people of old time and between the people of present age. इस स्टेंजा में पोइट हमें ये बताता है कि पुराने वक्तों में लोग सादा थे, खालिस थे, सच्चे थे. वो हंसते थे तो दिल की गहराइयों के साथ, वो हंसते थे तो हंसी उनकी आंखों से छलकती थी. लेकिन अब लोग हंसते हैं तो सिर्फ दांतों की नुमाइश होती है, जबकि उनकी आंखें बर्फ़ की सिलों जैसी ठंडी सर्द मोहर, बग़ैर फीलिंग्स, बग़ैर एहसासात के. बज़ाहिर वो हंस रहे होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन वो मेरे साए के पीछे भी तलाश कर रहे होते हैं कि इसके पीछे मज़ीद क्या है. स्टेंजा नंबर 2. देयर वाज अ टाइम इंडीड, दर हकीकत वो वक्त था. दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, वो दिल की खुशी के साथ, दिल की गहराई के साथ, दिल की मर्ज़ी के साथ हाथ मिलाते थे. बट दैट्स गॉन सन, लेकिन बेटे वो वक्त गुज़र गया. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अब वो लोग बग़ैर दिल की खुशी के, बग़ैर दिल की चाहत के हाथ मिलाते हैं. वाइल देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, जबकि उनका बायां हाथ मेरी खाली जेबों को की तलाशी कर रहा होता है, उनको तलाश कर रहा होता है, उनको टटोल रहा होता है. In this stanza, the poet also gives the comparison of the feelings, of the behavior, of the intentions of the old people and of the people of present age, that there is a huge difference between these two people, that the people of old age were very pure and very good people. They were naturally very good. They were very good in their behaviors. They used to shake hands when they wanted, when they had the intention of this.
But that time has gone. لیکن اب وہ وقت جا چکا ہے. Now the people shake their hands for their benefit, for their personal benefit. If they want to get some benefit from any person, then they shake hand with that person. And the other hand of that person is busy for searching of the pocket. In this stanza, the poet also tells us that there is a big difference, there is a huge difference, there is a great difference between the behavior of old and the people of new age. اس ٹینزا میں پوئٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ پرانے اور ابھی کے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے. ان کے خلوص میں فرق ہے، ان کے رویوں میں فرق ہے، اور ان کے اعمال میں فرق ہے. پہلے لوگ ہاتھ میں لاتے تھے تو اپنائیت کے اظہار کے لیے، لیکن اب لوگ ہاتھ میں لاتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. ایک ہاتھ سے ہاتھ میں لا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے خالی جیبوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ مزید فائدہ مل جائے. اس میں ان کی کوئی انٹینشن، کوئی ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ وہ بھائی چارے کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے فائدے کے لیے ملاتے ہیں.